Hey guys, very good morning to all of you. Welcome to Oliveboard. This is Aditya. I hope I'm audible and visible to all of you clearly. पहले साउंड चेक कर लीजिए, साउंड आ रहा है सारे लोगों को. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू गाइज अर्ली मॉर्निंग ऑन संडे. ठीक है. द रीजन वॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल येस्टरडे. कुछ चल रहा है अभी, मतलब कुछ काम है, बताऊंगा आप लोगों को कुछ दिनों में. So not related to Oliveboard, related to my personal life. So, but you are the part of that. So I'll inform you guys soon. So because of that, I was a little busy yesterday. Maybe tomorrow also Sheetal ma'am is going to take the session. कल का भी chance है. After that, again I'll be available. तो उसके बाद ट्यूसडे से मैं वापस से फिर से अवेलेबल रहूंगा. ठीक है. चलिए भाई, तो सेशन स्टार्ट करते हैं. सैटरडे नहीं किया था, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट ऑन संडे. एंड लेट्स कवर द न्यूज क्विकली. फटाफट से हम कर लेते हैं आज के न्यूज कवर. बहुत ज्यादा चीजें नहीं करेंगे भी, परेशान. वन सेक. Okay. So 7th and 8th January, current affairs. I'm going to discuss the news today. Quickly, not MCQs. By the way, you guys were asking for the session, that is marathon session. So on this Thursday and Friday, we kept the session. Thursday को शीतल मैम ले रही हैं, Friday को मैं ले रहा हूँ. So 2 sessions we are going to do for your SBA Clerk means examination. I hope my point is clear. ठीक. So the secret of your future is hidden in your daily routine. The secret of success is written in your daily routine. What you do daily, how you start your day, how you end up your day, it matters a lot. तो सारा कुछ वहीं पर है कि आपने मॉर्निंग में अपने डे टू डे टारगेट सेट किए या नहीं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिव्यूइंग देम और नॉट, दैट यू हैव अचीव देम और नॉट. क्या क्या आपने अचीव किया आज के गोल्स में से, क्या अचीव नहीं हुआ, उनको रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है. IBPS प्योर इंटरव्यू बैच इज गोइंग एक्सेप्शनली वेल गाइस. बहुत ही बढ़िया चल रहा है. मतलब लिटरली आई एम अमेज्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट. Thanks a lot guys for keeping so much faith trust on me. Do not miss to use the coupon code Aditya if any of you or your friends are joining it. So ask them to use the code. चलिए, क्वेश्चंस क्या थे हमारे पास होमवर्क के, वो देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनईएफटी. एनईएफटी सिस्टम स्टार्टेड इन नवंबर 2011. रॉन्ग है, 2005 में स्टार्ट हुआ था. There is no upper value limit, but the lower limit is 1000. This is also wrong. There is no lower or upper limit of NEFT. NEFT का कोई भी minimum या maximum limit नहीं है. Bank can levy the inward NEFT charges for more than 25 transactions per month. This is also wrong. All the inward transactions are completely free. सारे के सारे inward transactions completely free हैं. Remitter should have bank account. A beneficiary can receive fund without account. देखो, without account also we can transfer NEFT. Without bank account also NEFT is possible to do with the support of walk-in customer facility. तो walk-in customer facility से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है. यस, तो ये पॉइंट होगा आपके. तो नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पे. आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए. ठीक, क्लियर है. नेक्स्ट था, इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज वाज इश्यूड बाय एक्सिस बैंक. देखो, सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड बोला है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, वो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया. तो मैं कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं. इंडिया फर्स्ट बैंक टू लॉन्च मसाला बॉन्ड. इंडिया फर्स्ट बैंक टू लॉन्च मसाला बॉन्ड. पहला बैंक जिसने मसाला बॉन्ड लॉन्च किया था, दैट बैंक वाज HDFC. वो कौन सा बैंक था? HDFC था पहला बैंक. ठीक. दूसरा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इंडिया फर्स्ट बैंक टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड. ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला बैंक, सो दैट वाज यस बैंक.
यस बैंक ने लॉन्च किया था। तीसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है, इंडिया फर्स्ट बैंक टू लॉन्च green masala bond. Green masala means which is available in the foreign stock exchange but in the denomination of Indian currency rupees. So that was Axis Bank. And the same was the question actually in some different language. तो इन्होंने लैंग्वेज चेंज किया, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका एक्सिस बैंक। क्लियर? चलो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यूज्ड इन न्यू 2000 रुपी करेंसी नोट ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर है 18। अभी आप बोलोगे सर 18 कैसे होगा? सो देयर आर 15 लैंग्वेजेस ऑन द पैनल। जो करेंसी नोट का पैनल होता है उस पर कितनी लैंग्वेज होती है? 15 आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो 15 प्लस 2 होती हैं आपकी इंग्लिश एंड हिंदी। So total languages which are there on a currency note, that is 17. But in 2000 rupee note they used Braille lipi also, Braille. So plus 1 Braille. So total languages 18. Clear हो गया? ये पॉइंट क्लियर है? एक बार सीसी लिख दीजिए कि हाँ क्लियर है। Why 18? 15 17 में अभी तक कंफ्यूजन रहता है। अगर एग्जाम में पूछता है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन 2000 रुपी नोट ऑन पैनल, पैनल पर कितने हैं? आंसर विल बी 15 ओनली। तो 15 ही है पैनल पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, आंसर देखें किनके आए थे। शुभाशीष, अतुल, हरप्रीत, नमन, शिवानी, कई लोगों के आंसर थे, बट कहीं कहीं पर गलती हुई है कल के क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे। साई, सबा, नितेश, स्मिता, रचना, रीनू, मंजुनाथ, अभय, निवेदिता, काव्य, प्रियंका, अंजलि, नितेश एंड करुणा, सुजाता। परफेक्ट आंसर्स गाइस। चलिए कल के लिए होमवर्क के क्वेश्चंस ले ले। प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज्ड ऑन विच डेट टू रीऑर्गेनाइज द बुक एंटिटी इन द नेम ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? सो प्रेसिडेंसी बैंक्स कन्वर्टेड टू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ऑन विच डेट? On which date Imperial Bank of India became State Bank of India? How many banks got merged into State Bank of India on 1st of April 2017? तो ये 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर आपके पास। आंसर आप लोग जानते हैं कहां पर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लगा दीजिए। ठीक, नेक्स्ट है प्रियंका, न्यू नोट्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर 2000 रुपी नोट, उसके बाद से इंट्रोड्यूस हो रहा है, बट 2000 रुपी नोट वाज द न्यू नोट। बाकी नोट्स के लिए आप आंसर 17 ही करो, डोंट वरी, ठीक है। बाकी नोट्स के लिए आंसर 17 ही करो, बट 2000 बिकॉज इन अदर नोट्स वी हैव ओल्ड एंड न्यू ऑल द नोट्स, दैट इज व्हाई यू कैन आंसर 17 फॉर अदर्स एंड 18 फॉर 2000। ठीक है, एसबीआई क्लर्क क्रांति बैच, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर the complete preparation of GA for SBA Clerk. SBA PO means SBA PO Drona batch. PO का एग्जाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, so if any of your friend is looking for the batch of for SBA PO, you guys can suggest them. मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली न्यूज पर आज। न्यूज नंबर 1 रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक टू बैंक आरबीआई न्यूज चल रहा है अभी, 2-3 न्यूज है हमारे पास आरबीआई से रिलेटेड। कोशिश करूंगा क्विकली और इजीएस्ट मैनर में डिस्कस कर लूं। सो एवरीवन नोज अबाउट द ओम्बुड्समैन। Ombudsman meaning is Lokpal. So Lokpal is a entity to resolve the customers' grievances or the problem of customers related to the bank, that is called banking Lokpal. Previously we had 3 different Lokpals. हमारे पास 3 different Lokpals थे in the banking industry. One for bank, one for NBFC, non-bank financial company, and one for the digital transactions. So there were 3 Lokpals previously. Now in the year 2021, that was 12 November 2021, all 3 got merged and now they are called Reserve Bank Integrated Ombudsman. इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन। All 3 got merged. Now recently data came that according to the annual report of 21-22,
the complaint has been increased by 9.39%. जो इंटरनल ombudsman है आपका, सॉरी इंटीग्रेटेड ombudsman जो है आपका, उसमें complaints 9.39% से increase हुई है. Means banking customers are more, you can say that nowadays are more aware also about their rights. It is the indication they are more aware about their rights also. They are complaining against the bank, or they are facing more problem in the banking industry. Most of the cases came from the digital transactions. Means maximum complaint, that is 42% complaint, were on digital mode of payment and transaction. So NEFT, RTGS, IBPS, UPI, especially UPI related complaint इन्हीं से थी, related to frauds, related to cash transaction failure, fund not refunded. So such type of complaints were approximately 42%. So data क्या क्या pick करना है यहाँ से? What was the increment or increase in the complaint ratio or rate recently in the year 2021-22 in integrated ombudsman scheme? तो point number 1 आपका बनेगा 9.39% से increase हुआ है. Overall complaints were approximately 4,18,000. तो 4,18,000 complaint register हुई in 1 year, and maximum complaints were related to the digital transactions. Point clear है? एक बार CC लिख दीजिएगा जी. एंड यस, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर लोकेटेड है? चंडीगढ़ में लोकेटेड है. लेट मी रेज अ क्वेश्चन. हाउ मेनी डेज कस्टमर्स हैव टू वेट आफ्टर इन्फॉर्मिंग टू द इंटरनल ग्रीवेंसेस टीम ऑफ बैंक फॉर द फीडबैक और फॉर द रिप्लाई बिफोर रीचिंग इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन? इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन पर जाने से पहले कितने दिन वेट करना होता है कस्टमर को अपने बैंक को प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करने के बाद? तो एक डेडलाइन है. आफ्टर दैट ओनली कस्टमर्स कैन रीच आउट टू द इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन. सो या 30 डेज करेक्ट है. सेकेंड न्यूज, अगला न्यूज ऑल्सो रिलेटेड टू आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन सैंडबॉक्स टू 6 फॉर्म फॉर टेस्ट एंटी फ्रॉड सॉल्यूशन. सो आप लोगों को याद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ थीम्स लेकर आए थे, and based on that themes RBI was doing the experiments. That experiments were called sandbox, right? Regulatory sandbox, that initial phase testing. Did you remember that how many such sandbox or cohort was launched by Reserve Bank of India? वो themes को cohort कहा गया and they were launched by Reserve Bank of India. एक है आपका prevention mitigation of the financial frauds. If I am not wrong, it was the fourth number. We'll see it. Fourth number of cohort, if I am not wrong. So 6 entities has been selected by Reserve Bank of India. 6 companies को select किया है RBI ने to give the result of test based on prevention and mitigation of financial frauds. तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कैसे खत्म किया जाए, कम किया जाए, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने का 6 कंपनीज को टारगेट दिया गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दीज कंपनीज आर बेहवान साइबर टेक, क्रेडिट वॉच इंफॉर्मेशन, एंड स्टेज सॉफ्टवेयर, HSBC in collaboration with Wibmo and NAPID Cybertech and Trusting Solutions. So these are the 6 companies. Let's see a question. Which bank has been selected by Reserve Bank of India test phase on tap application facility based on the retail payment under regulatory sandbox? तो कोहॉर्ट था रिटेल पेमेंट, उसके लिए किस बैंक को सिलेक्ट किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली? क्या आंसर है इसका? पक्का एचडीएफसी? बढ़िया. सो एचडीएफसी बैंक एंड वन एनबीएफसी, प्रिसीशन बायोमेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड. 2 organizations. One is HDFC Bank, second is Precision Biometric Private Limited. These were selected by Reserve Bank of India for which one? For retail payment. ये देखो ऐसे क्वेश्चन है. अभी आपको मैंने जस्ट क्या बताया? For which purpose? For prevention, mitigation and financial fraud. How many companies? 6 companies has been selected. तो 6 कंपनीज को सिलेक्ट किया है प्रिवेंशन मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए. रिटेल पेमेंट के लिए 2 एंटिटीज हैं.
वन इज एचडीएफसी बैंक, सेकंड इज प्रिसीशन बायोमेट्रिक। ये आपके 2 पॉइंट हो गए यहां से। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता क्या है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग, मार्केट टेस्टिंग, बट नॉट ऑन ऑल द कस्टमर्स, under a limited area, in between the limited range of customers. Such type of testing has been done, and based on that the result is presented in front of the regulator. So regulator decides based on the result that this product will be working for the market or not. तो मार्केट में कोई प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए एक तरीके से इट इज अ टेस्टिंग बिफोर द मार्केट लॉन्च। तो मार्केट लॉन्च से पहले का टेस्टिंग होता है। सो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, आरबीआई केम अप विथ 5 रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और 5 कोहॉर्ट, ऐसे 5 कोहॉर्ट, 5 थीम लेकर आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यू विल से बट सर हियर वी आर एबल टू सी 4, आई विल टेल यू अबाउट द 5th वन ऑल्सो। तो फर्स्ट कोहॉर्ट आपका जो है ये था बेस्ड ऑन रिटेल पेमेंट, सो इट वाज बेस्ड ऑन रिटेल पेमेंट। सेकंड वाज बेस्ड ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। थर्ड वाला था आपका एमएसएमई लेंडिंग। फोर्थ वन था प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो इसी के लिए अभी कितनी कंपनीज को सिलेक्ट किया है आरबीआई ने? 6 कंपनीज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 4th कोहॉर्ट, दैट इज प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। एंड फिफ्थ cohort is on tap application on for second cohort. So fifth cohort is related to second one actually. तो पांचवा वाला सेकंड से रिलेटेड है। ऑन टैप एप्लीकेशन, नियर फील्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टैप टू पे, सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑल्सो। तो ऑन टैप एप्लीकेशन इज द 5th कोहॉर्ट। तो 5वें नंबर का ये है। आई होप माय पॉइंट्स आर क्लियर गाइस। टोटल कितने हैं? 5 हैं, पांचों के नाम मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट न्यूज अगेन RBI issues update for the KYC process. Those who are going for IBPS PO interview guys, जितने भी लोग IBPS PO इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, याद रखिए सारे न्यूज आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी आरबीआई ने क्या चेंज किया है केवाईसी नॉर्म्स में, पता है आपको? ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा that are you aware about the recent change in the KYC? There was some news regarding KYC changes. What is the news? What is that news of RBI? Simple question. ठीक है, तो केवाईसी वगैरह तो काफी इंपॉर्टेंट है यार इंटरव्यू के लिए, मानकर चले आपकी बिल्कुल एक पक्का क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। आरबीआई इश्यूज fresh KYC process. Reserve Bank of India issues periodic updation of the KYC detail for the customers. As per the release, the fresh KYC can be done via visiting the bank branch or remotely through video based customer identification process. देखो यहां पर आरबीआई ने क्या कहा है that it is not necessary to do the re-KYC by visiting branch only. Every bank has to provide the option of digital KYC, of video KYC. हर एक बैंक को video KYC का ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। If there is no change in the KYC declaration form, individual can sufficient to submit the re-KYC process. अगर उसमें कोई changes नहीं है KYC में, if you have not changed your address, if you have not changed your name in between time, तो अगर आपने अपना एड्रेस नाम वगैरह चेंज नहीं किया है in between, then in that case re-KYC can be done easily online. Customers can use the detail registered by using ATM to do re-KYC. ATM machines वगैरह का भी यूज हो सकता है re-KYC के लिए। The only update here is RBI given the flex, आप बोल सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कस्टमर्स को। दे गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी दैट विदाउट विजिटिंग बैंक ब्रांच ऑल्सो नाउ कस्टमर्स कैन डू द री-KYC एट देयर होम। ठीक, चलिए आगे चले। नेक्स्ट है आरबीआई लिफ्ट, अगला न्यूज रिलेटेड टू आरबीआई बैक। आरबीआई लिफ्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन Mahindra and Mahindra Financial Services. So in September 2022, Mahindra and Mahindra Financial Services है NBFC, ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी इन द फाइनेंस सेक्टर। तो ये क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। तो रिमेंबर whenever any NBFC is providing loan and if that loan become NPA, so these NBFCs make the life of customer hell.
ये लिटरली कस्टमर्स की जीवन को, दैट इज अ जेन्युइन कस्टमर और नॉट, ही मे बी फेसिंग सम जेन्युइन इश्यूज और नॉट एबल टू पे द ईएमआई, they doesn't matter, it doesn't matter to them. ARCs are different, guys. Asset reconstruction companies are professional loan recovery agents. They are actually professional loan recovery agents. But NBFCs hires usually local goons to recover the loan. तो ये क्या करते हैं कि जो भी राउडीज होते हैं लोकल, उनको हायर करते हैं project to project basis, that we want this loan to be recovered. Can you do that? We'll give you percentage. So they offer 2%, 5%, 10% to the local rowdies and do the recovery with the support of that. ठीक है, चलो भाई, ये वाला न्यूज समझ में आया। तो सितंबर में आरबीआई ने बैन किया था, अभी बोल दिया है दैट यू कैन कंटिन्यू नाउ। अब पता नहीं क्यों था ये, मतलब बैन तो किया था बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स ओनली, नाउ मे बी द कंप्लेंट रिजॉल्व, सो आरबीआई सेड यू कैन कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग, ठीक है, कोई बात नहीं। बॉट IBPS पीओ इंटरव्यू, ठीक है। स्टिल आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द वीडियो, इट इज टेलिंग परचेस अगेन। कुछ नहीं करना है, एक बार लॉग आउट करो, हिस्ट्री क्लियर करो, लॉग इन करो, वापस से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, अपना डिवाइस का हिस्ट्री क्लियर करो, लॉग आउट करो, लॉग इन करो, हो जाएगा। ठीक, छोटा सा प्रॉब्लम। Congrats, by the way, for clearing mains, and best of luck for your the interview. And we'll meet definitely when you already bought the interview batch. So अभी मंडे को लाइव क्लास में मिलेंगे वापस से। चलिए सर, आगे आ जाएं। ICICI बैंक लॉन्चेस डिजिटल सॉल्यूशन फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स को इन्होंने बहुत सारे ऑफर किए हैं, दैट इज इंस्टा, EPC एंड ट्रेड अकाउंट, पेपरलेस एक्सपोर्ट सॉल्यूशन, मैनी मोर। सो बेसिकली एक सिंपल वन लाइन में अगर मैं आपसे बोलूंगी क्वेश्चन बनेगा, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड द इनिशिएटिव टू इंक्रीज द बिजनेस फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स, आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। रिसेंटली विच बैंक लॉन्च अ पैकेज ऑफ फैसिलिटीज फॉर द एक्सपोर्टर्स टारगेटिंग टू द एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। तो डिजिटल सॉल्यूशन फॉर द एक्सपोर्टर्स लॉन्च्ड बाय ICICI बैंक। नेक्स्ट है एजॉन लाइफ इंश्योरेंस। Agon Life Insurance launches I-term Prime Loan Insurance Plan. तो Agon ने भी recently I-term Prime Insurance Plan launch किया है। ये वर्ड को पकड़ लो, बस यही वर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट करेगा। क्वेश्चन विल बी, which of the following insurance company recently launched I-term Prime Insurance Plan? This plan is फोकस्ड ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, जो भी बिजनेस कर रहे हैं अपना, उनके ऊपर ये फोकस्ड होगा। एंड इट ऑफर मिनिमम सम एश्योर्ड ऑफ 25 लाख विथ नो अपर लिमिट। ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल एग्जिट वैल्यू ऑप्शन एट द एज ऑफ 55। देखो आजकल क्या कर रही है कंपनी, टर्म इंश्योरेंस में ऑप्शन दे रही है। यू आर टेकिंग द टर्म इंश्योरेंस अप टू 60, इफ यू वांट टू एग्जिट आफ्टर 55 years, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 55 years, whatever the premium you have paid, they will return the same premium to you. इंटरेस्ट नहीं देंगे, बट वो सेम टू सेम प्रीमियम आपका क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये एग्जिट ऑप्शन ऑलमोस्ट एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज प्रोवाइडिंग नाउअडेज इन द टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मींस family is eligible to get the funds only after the death of that individual, that is called term insurance. तो उसको term insurance कहा जाता है। if the insured is survived and maturity period is over, then there is no return. ठीक, क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट, SBI म्यूचुअल फंड received RBI approval to buy 9.99% स्टैक इन इक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्वाटस में भी SBI का दिमाग चल रहा है, तो SBI जो है बढ़ाते ही जा रहा है, ऐसा ना हो किसी दिन HDFC को ही खरीद ले। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया approved SBI mutual fund to acquire 9.9% of paid up capital of Equitas Small Finance Bank through SBI mutual fund scheme. तो SBI mutual fund के सपोर्ट से फाइनली SBI mutual fund is the subsidiary of SBI. So SBI bought 9.9% stake in Equitas Small Finance Bank. Simple one line question. Which bank recently bought how much percent in Equitas Small Finance Bank? 9.9% स्टैक हो गया, बैंक हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विद द सपोर्ट ऑफ SBI म्यूचुअल फंड इन्होंने बाय किया है।
So headquarter of Equitas Small Finance Bank is Chennai. Arun Ramanathan sir is the chairperson and Vasudevan PN sir is the managing director. Next appointment news है. अगला point, Gem and Jewelry Domestic Council elect Shyam Mehra as the chairperson. So All India Gem and Jewelry Domestic Council, it is an organization which is managing the rules and regulation of the jewelry sector in India. तो इंडिया में ज्वेलरी सेक्टर के रूल्स रेगुलेशन वगैरह मैनेज करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड जीजेसी. तो इसको बोलते हैं जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल. सो मिस्टर श्याम Mehra has been appointed as the chairperson of it and Rajesh Rokde sir appointed as the vice chairperson. तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन दो अपॉइंट हुए हैं और ये आपका डोमेस्टिक काउंसिल है फॉर द जैम एंड ज्वेलरी. बहुत सिंपल सा न्यूज है. Although we are going to revise at least 2 to 3 times more in the upcoming days, so you will be able to learn the name. तो वो वन लाइनर्स में जैसे मैं करवाता हूँ वैसे मैं रिवाइज करवाता रहूंगा ताकि आपको नाम याद हो जाए दोनों के. ठीक. Government of India declared the Resistance Front (TRF) as a terrorist organization. So in the year 2019, if I'm not wrong, yeah, 2019. In the year 2019, this organization was formed as as a प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा. प्रॉक्सी मतलब लश्कर ए तैयबा was banned around the world, so they make a new entity, register a new entity and they start activity with the name of that. After few years, it took 3 years to announce this organization, that Resistance Front, it is a terrorist organization. It took almost 3 years to do that because आप ऐसे suddenly announce नहीं कर सकते. You need valid proof to announce any registered organization that this is a terrorist organization. So we took 3 years to announce it. Tomorrow they will make a new one and start their activities. तो वो कल नया बना लेंगे. So Lashkar-e-Taiba to Resistance Front and after that new one. वापस आता हूँ न्यूज पर. न्यूज क्या है and data. Ministry of Home Affairs declared Resistance Front as a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, that is UAPA. बहुत इंपॉर्टेंट है 1967. So UAPA Act of 1967 के अकॉर्डिंग इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया. मिनिस्ट्री ऑल्सो अनाउंस शेख साजिद गुल of TRF, commander of TRF, as a terrorist under the 4th schedule of UAPA Act of 1967. तो UAPA Act came in which year? 1967 का act है, important है. This organization came in the existence in the year 2019 as a proxy organization of Lashkar-e-Taiba. The organization band listed the serial number of 5 schedule under UAPA Act. आप तो सिर्फ UAPA Act याद रखो. 1967 UAPA Act. According to that, this organization and this person Amin Alyas and this person your Sajid Sheikh Sajjad Gul, so they are announced as the terrorist. इनको terrorist announce किया है. So they are announced as the terrorist and the organization announced as the terrorist organization. Act came in which year? Act came in which year? 1967. नमन बोल रहा है सर संडे. नो यार सैटरडे नहीं ले पाया ना TNA, इसलिए तो मिस नहीं करना चाहता था. न्यूज बहुत सारे आ रहे हैं and if we will just try to take them together after 2-3 days, बहुत difficult हो रहा है because of the number of news. India 2023 Science Vision 108th Indian Science Congress recently conducted in Nagpur, Maharashtra. हमने डिस्कस किया हुआ था. Theme was Science and Technology for the Sustainable Development of the Women Empowerment. So 3rd of January को conduct हुआ. PM Modi also participated into it and he had a discussion around the achievement of India in the field of science and tech. तो एक रिवीजन न्यूज हो गया आपका कि कहां पर कंडक्ट हुआ, कौन सा एडिशन था. 108th एडिशन इट वाज कंडक्टेड इन नागपुर एंड फर्स्ट टाइम दिस इंडियन साइंस कांग्रेस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2015. तो 2000
नहीं 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 नहीं, 1 सेकेंड। इंडियन साइंस कांग्रेस जो आपका था ना, ये पहली बार हुआ था आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1915 और 1917, आइदर 1915 और 1917, ऐसा कुछ है ईयर, 1915 होगा आई थिंक। 1914-15 फाइनेंशियल ईयर था, सो इन दैट ईयर इट वाज कंडक्टेड। या तो पहली बार आपका यहां पर हुआ था। बाकी आपके पीडीएफ में है, ये मैंने एक बार ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है साइंस कांग्रेस। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर नेशनल जियोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेटेड एट मोहाली। तो मोहाली में कंडक्ट हुआ, मोहाली में स्टार्ट हुआ है आपका जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो जीनोम मीन्स जीन्स, आपने सुने हुए हैं ना, दैट वी बिलोंग्स टू द जीन्स ऑफ आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो जीन्स का असर होता है। तो my kid will definitely have few qualities of mine and few bad habits of mine, जो भी बोल सकते हैं। तो हो सकता है because of genes, that is a sequence genome। So genome editing in the plants specially, not human being। So genome editing का पहला जो सेंटर स्टार्ट हुआ इंडिया का, दैट इज स्टार्टेड इन मोहाली। तो मोहाली में वो आपका स्टार्ट हुआ है। 4-day international conference on the food and nutrition security 2023 was also conducted in Mohali, पंजाब। तो मोहाली पंजाब में आपका ये 4 दिन का ये भी कंडक्ट हुआ है। जीनोम एडिटिंग एक्चुअल में क्या है वो आप पढ़ सकते हो, यहां से डीएनए में चेंजेस किए जाते हैं फॉर द जीनोम एडिटिंग। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम फॉर पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट एस्टेब्लिश्ड इन त्रिवेंद्रपुरम, केरला। त्रिवेंद्रम केरला। तो त्रिवेंद्रम केरला में स्टार्ट हुआ है आपका पहला, वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट मींस मे बी इन फ्यू मूवीज यू हैव सीन दैट इंडिया का जो हमारा वेदास है एंड द एंशियंट लिटरेचर ऑफ इंडिया, दैट इज रिटन ऑन द लीव्स, वो पत्तों के ऊपर लिखा हुआ है। So palm leaf, the script which is written on the palm leaf, the heritage which is there on the palm leaf, that palm leaf will be used as to create the first museum of palm leaf manuscript. It is started in Trivandrum, Kerala। तो त्रिवेंद्रम केरला में ये स्टार्ट हुआ है। क्लियर? मैं बिल्कुल मेन न्यूज आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा। देखो कुछ न्यूज ऐसे होते हैं वेयर वी हैव टू गो थ्रू वेरी डिटेल्ड न्यूज, लाइक आरबीआई न्यूज एंड ऑल, आई हैव गॉन थ्रू in detail, we discussed the additional point also। in such news 99.9% your first line will be your question in exam। ये जो आपका पहला लाइन है ना, यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। अनुराग सिंह ठाकुर launches Y20 summit logo website। So Youth Affairs Minister recently launched Youth 20 Summit logo website on 6th of January। Y20 will be the part of G20। Y20 भी क्या होगा सर? G20 का पार्ट होगा, which will be youth focused or which will be managed by, led by youth to शो द पार्टिसिपेशन इन द G20। तो G20 में पार्टिसिपेशन के लिए अभी यूथ 20 भी आपका आ गया है। तो हु विल बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूथ 20, विल सी इट, लाइक वी हैव B20, आफ्टर दैट B20 था, एक आपका क्या था, C20 था। सो B20 C20 चेयरपर्सन ऑल्सो वी हैव। Y20 लेट्स सी हु विल बी द चेयरपर्सन। India's first inclusion festival, Purple Fest, conducted in Goa। Purple Fest was the fest to show the importance and power of handicapped people in India। तो जो आपके डिसेबल्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, उनका एक इवेंट अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया, दैट वाज कॉल्ड पर्पल फेस्ट एंड इट वाज कंडक्टेड इन गोवा। ये न्यूज पहले भी डिस्कस किया है मैंने, when it was about to conduct। So at that time also I told you, now it is conducted, now again we are repeating it। So this news was not the first time we are discussing, right? Next है, क्या हो गया बेटा? हाँ रेजिन, एनी प्रॉब्लम?
For 23, when I start watching it? देखो करंट अफेयर्स का बहुत सिंपल रूल है. You have two options to watch or prepare the current affairs. When current affairs is there in the form of news with you, जैसे आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये न्यूज है. If you want to prepare it in the form of news, that is best. Now same news will be converted into syllabus after a month. That will be called the current affairs of January 2022, 23. So Jan 2023 current affairs. That will be a syllabus. When it converted to syllabus, it is very difficult, boring to remember them and learn them. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा that watch it properly on a daily basis. Whatever the exam you are targeting in the year 2023, you should start the current affairs from January. ठीक, मिल गया आपको? चलो आगे चले. नेक्स्ट, India deployed a platoon of women peacekeepers of United Nations mission in Sudan. So UN started such peacekeeping mission with the countries which are under disturbance. UN deploy their forces, and how the UN forces has been formed. UN का peacekeeping mission forces has been formed with the support of countries like India. India is giving lots of forces for the UN peacekeeping mission. So from the year 2007 onwards, India started deploying the women contingent. Means जो women force है उसको भी start किया इंडिया ने deploy करना UN peacekeeping mission में. So in 2007, India became first country to deploy entirely women contingent for United Nations peacekeeping mission. पहला country था इंडिया जिसने अपनी महिलाओं की फोर्स को यूएन पीस कीपिंग मिशन में इंस्टॉल करना है या अपॉइंट करना स्टार्ट किया. ठीक है. यूनाइटेड नेशन इंटर्म सिक्योरिटी फोर्स, यूनाइटेड नेशन इंटर्म सिक्योरिटी फोर्स that is formed, resolution came in the year 1990 of 2011 it was formed. 2011 में आपका ये इंटर्म फोर्स स्टार्ट हुआ, मतलब established हुआ. And in the Abyei region of Sudan, it was deployed in the year 2011. तो सूडान में इसको 2011 में डिप्लॉय किया गया. रेजोल्यूशन केम इन द ईयर 1990. UN peacekeeping mission started from 1948 onwards. 1945 में आपका यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था, आपको याद होगा. That UN was formed in the year 1945. 1945 में ही बना था UN. 48 में इन्होंने स्टार्ट किया UN peacekeeping mission in the Middle East of the country. India is one of the largest fullest contributing country in the UN peacekeeping mission. वापस आता हूं, एक बार फिर से न्यूज बताता हूं. Recently, India deployed a complete women contingent in which country? Sudan. Why India deployed? Because of UN peacekeeping mission. UN peacekeeping mission आपका कब से स्टार्ट हुआ? 1948 से. By the way, UN was formed in the year 1945. एक लास्ट न्यूज ले रहा हूं आज के लिए. उड़ीसा won UN Habitat World Habitat Award 2023 for जगह मिशन. सो जो आपका उड़ीसा का जगह मिशन है, UN Habitat awarded 2023 5T transparency, technology, teamwork, transformation, time. तो ये 5T इनिशिएटिव थे जगह मिशन के. जगह मिशन इज अ लैंड ओनरशिप एंड स्लम अपग्रेडेशन मिशन. आपको पता होगा उड़ीसा अनाउंस्ड टू बिकम द स्लम फ्री स्टेट ऑफ द कंट्री, स्लम फ्री स्टेट ऑफ द कंट्री इन 2023. इन्होंने अनाउंस किया कि 2023 में ये स्लम फ्री बन जाएंगे. सो दे लॉन्च द मिशन फॉर इट, दैट इज कॉल्ड जगह मिशन. अंडर इट 5T initiative was also there. So that is awarded by United Nation Habitat World Habitat Awards. So World Habitat Award ने इनको इसीलिए अभी ऑनर किया है. So guys, this is done from my side for the day. I'll be meeting you guys back soon. मैं जो आपके इंटरव्यूज हैं IBPS PO के, उनके लिए भी काम कर रहा हूँ. Those who are freshers and they actually want the complete strategy for the current affairs, they can write their demands in the comment box. I'll pick them from there and I'll make the video for
the freshers also. So it is not a problem for. ठीक है, चलिए guys. So happy Sunday to all of you. Go and do study well. ठीक है, don't waste your Sunday. Do study well. I'll be meeting you guys back in the next session. Till that time, keep watching Oliveboard. जय हिंद. एक इंपॉर्टेंट चीज है, आज पेड टीएनए में 3 सेशंस हैं, तो पेड टीएनए वाले बच्चे याद रखें दैट होल संडे आई एम वर्किंग बिकॉज ऑफ योर एसबीआई क्लर्क मींस एग्जामिनेशन. तो रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, काय का एग्जाम का, नॉट कोविड पॉजिटिव. नहीं तो बोल दो सर रिजल्ट आ गया पॉजिटिव कोविड का. कोविड नेगेटिव रखना है और एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट पॉजिटिव. सो 3 क्लासेस वी हैव टुडे इन द पेड टीएनए, 12 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock. याद रखिएगा, बी देयर ऑन टाइम. थैंक यू गाइस, जय हिंद.